Hello everyone, welcome back. Today I am going to start online classes for class 10. Okay? And today I am going to discuss about database management system. We can see here Unit 3 Relational Database Management System. What this? Okay? In this unit we are going to discuss some basic concept of database management system, creating and editing tables using wizard, okay, and SQL commands also. Okay, session 3, perform operations on table. Operations on table means, as you know, adding data in a table, deleting data from the table. Second one, delete data, or you can say record from the table. Next, select command, using select, retrieve the data from the table. You can see inside the session 4 under the relational database management system, retrieve data using query, using select command or wizard also. And the session 5, create forms and reports using wizard. Okay, so these are the topics under the database management system basic. Okay, so without delaying, let's start the topic one by one. This is a quick review. Already discussed what is the database management system and some concept of database management system like table, query, form, reports, etc. I am going to revise. The PT3 portion is chapter number 4, 5 and chapter number 8. And chapter number 8 is relational database management system. Okay. Now, okay. So first of all, let's discuss about database management system. What is a database management system? Okay, we can see here the first definition of database. As you know, a database is an organized collection of data. This is the important point. Okay. A database is an organized collection of data. You can visualize it as a container of information. Okay, that's all. Okay, so keep in mind, any database, I'm talking about any database, it means I'm talking about the organized collection of data. Organized collection means a sequence order, either in ascending or descending. Okay, so keep in mind the first definition of database. Database is an organized collection of data. You can visualize means access the data, or you can edit the data or delete the data from the database tables. So main point is you can visualize it as a container of information. Okay, no problem. So the first definition of database is a simple words, each or database an organized collection of data. Okay, now next point is database management system. In the short,
DBMS, DBMS, okay, DBMS. DBMS stands for Database Management System. Okay, as you know, DBMS is a software package. DBMS is a software package with computer programs that control the creation. Creation means like create table. One command is there in SQL, create table. Using this command we can create a new table. It means the creation of databases. Maintain, or you can maintenance. Maintenance means update command in SQL, and use of a database. It means using DBMS software, database management software, you can easily create a database, maintain the database, delete the database, or retrieve the data from the databases. That's all. Okay. Next point is it allows organizations to conveniently develop database for the various applications. And next point is a database is an integrated collection of data, records, files, and other objects. Okay, it means a database collection of records that are integrated together. Okay, a database allow users, application program to currently access the same database. Suppose one website name like www.google.com. Okay, google.com. This website containing one database, at least one database. Okay, so multiple users at the same time access a website google.com. Then a DBMS allow different users, multiple users, application program to currently access the same database. It means at the same times multiple users can be access the same database. In this example, we are trying to access multiple users at the same time. Which website? Google. The Google database responds each and every users and provide the Google sites at the client end. Okay, so keep in mind, Google, not a Google, every website allows different users, applications, program to currently access the same databases. इसका मतलब यह है कि कोई भी डेटाबेस एक समय में मल्टीपल यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है. एग्जांपल के लिए suppose this is your website. गूगल की एक वेबसाइट, ठीक है. इस वेबसाइट को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करना चाहते हैं. सपोज क्रिएट ए यूजर वन या दिस इज द फर्स्ट यूजर, सेकेंड यूजर, थर्ड यूजर. मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम एक ही वेबसाइट को एक्सेस करना है. वो वेबसाइट क्या है? गूगल. तो गूगल के पास एक डेटाबेस होगा. क्लियर? देन
फर्स्ट यूजर, सेकेंड यूजर, थर्ड यूजर एट द सेम टाइम किस वेबसाइट को एक्सेस किया? गूगल डेटाबेस। तो गूगल डेटाबेस फर्स्ट यूजर को वही सर्विस प्रोवाइड करेगा, सेकेंड यूजर को वही सर्विस प्रोवाइड करेगा एंड थर्ड को भी वही सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि करेंटली एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर्स को वह डेटाबेस से रिस्पॉन्स करता है। क्लियर? दिस इज द एडवांटेज और यू कैन से the one quality of a database, provide a service to all user at the same time. Okay, okay. Next, this is the some DBMS softwares are famous one. Oracle is a example of DBMS software. IBM DB2, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Post SQL, MySQL, Foxborough and SQLite. These are the some famous DBMS softwares. Okay. Next point is, this is the very important points. Very important points. Data can be organized into two types. Data can be organized into two types. First one, flat file. Second one, relational file. Okay. Flat file means a data can be stored only in one table. Only in one table. Like table 1. SID, name, class, some more fields, no problem at all. But flat file store the data in a single table. This is the important point. Okay. Usually suitable for the less amount of data. If I'm talking about a single table means one table. Then we can say I'm talking about the flat file. Which file? Flat file. Data stored only and only in a single table, that is called flat file. Okay? Are you getting me? Okay. Now, the next point is relational. Okay? Data is stored in a multiple tables. Multiple table means two or more than two tables. Okay, and the tables are linked using a common field. Relational is suitable for the medium to large amount of data. Okay, medium to large amount of data. Suppose my requirement is to store a large amount of data in a databases. Then which type of databases we are going to use? Relational or flat file? Both, but high priority is relational. Because relational databases containing multiple tables. Okay. Multiple tables linked together using a common fields. Suppose one example here. Wait a moment. We can see this is the first table name, client table. Second table name, sales table. Client table containing 4 fields: client ID,
name, address and phone. Okay, in client table how many fields are there? 4 fields: client id, name, address and phone. And keep in mind, the first field of the client table is a primary. We can see is a primary. Okay, or second table. Second table name is sales table. Okay, this sales table also contains how many fields? 4 fields. We can see here: order ID, client ID, sales date. Actually, this is the item what. Okay, we can see here this client ID is a primary key, and order ID is also a primary key of which table? Sales table. Okay, now I'm trying to link together both table, client table with sales table. Okay, with the help of which key? Primary key. Okay, with the help of which key? Primary. This common field, client ID and client ID of the client table and client ID of the sales table responsible for linking two tables together. Okay, and this whole thing is called relational databases. Okay, if I'm talking a single table, it means only this table and only this table, no link together. Okay, no link between. Then single table is called flat file. Okay, this single table is called which file? Flat file. Okay, flat file. But linked together means combine or link client table with the sales ID, which is one common fields name is client ID. Then this is occurred relational. Which one? Relational database. Okay, जब हम एक टेबल की बात करें, कितने टेबल की बात करेंगे? एक टेबल, सिंगल टेबल, क्लाइंट टेबल. तो इस केस में इस फाइल को हम क्या बोलेंगे? फ्लैट फाइल. सेपरेटली अगर हम सेल्स टेबल की बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लैट फाइल. पर दोनों टेबल्स को मैंने लिंक कर दिया एक कॉमन फील्ड से, क्लाइंट आईडी टू क्लाइंट आईडी, तो यह दोनों मिल करके एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा रिलेशनल फाइल. ओके, रिलेशनल फाइल. सिंपल आपको समझना है. कोई भी टेबल है, अगर सिंगल टेबल है और उसमें डेटा स्टोर है तो क्या लाएगा? फ्लैट फाइल. ओके, जब डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स है और मल्टीपल टेबल्स लिंक्ड है कॉमन फील्ड से, तो वहां पर जो डेटा स्टोर होगा उसे कौन सी फाइल बनेगी? रिलेशनल फाइल. ओके, दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल फाइल. मेनी टाइम्स asked in the exam this type of questions. What is the difference between flat file and relational file? Okay, so keep in mind. Okay, now so keep in mind data can be organized to two types: flat file and relational file. Now database server. What is the meaning of the server? There are two key concepts in a networking.
first one, this is server, this is client, this is also a client, client 1 and client 2. Okay, in network, server is a computer, server is a computer and client is also a computer, but server provide a service to the client and client request a service from the server. Okay, so any networking, there are two types of key concepts. First one server, second one client. Client always responsible for request a service from the server and server responsible for provide a service to the client. Suppose as a client user, this is the client user, I'm type here inside the website like www.google.com, then simply request from the server, provide a service like google.com, then server responds to the clients and automatically at the client end a Google website open. Okay, google.com. So each and every server containing a database, then simply call this server is a database server. Okay, are you getting me? So we can see here, okay, this one, database servers. Database servers are dedicated computer that hold the actual database and run only the DBMS and related software. Okay, so any website, two types of fields. First one backend, second one front end. Okay, backend or front end. Okay, suppose I am type of google.com. Okay, then simply Google website open at the client end. Okay, तो वहां पे क्या होगा, जब गूगल वेबसाइट मेरे पास ओपन हो गया तो वहां हुआ क्या, गूगल का जो सर्वर है वो कहां पे होता है, बैकएंड पे, जिसे हम बोलते हैं डेटाबेस सर्वर. क्या बोलते हैं, डेटाबेस सर्वर. ओके, जो डेटा ओपन हुआ, गूगल वेबसाइट ओपन हुआ, वो कहां हुआ, फ्रंट एंड, जहां पे यूजर उसको ऑपरेट कर रहा है. तो डेटाबेस जहां पे स्टोर हो रहा है, जहां पर डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस सर्वर. और हमेशा क्या होता है, बैकएंड होता है, जहां पे यूजर इंटरेक्ट होता है, वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है, उस पे कुछ इंटरेक्टिव वे में कुछ काम कर पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैकएंड, सॉरी फ्रंट एंड. ओके, सो कीप हियर backends. Such type of access is referred to a client server model. Okay, backend means store the data inside the database server. Okay, so keep in mind, database server means a server at the server end to store a large amount of data. Okay, that is called backend also. Okay, some advantage of databases, we can see data redundancy. It means reduced data redundancy. It means a duplication of data. Using this method, only store a single data in a database table. We are trying to store duplicate data, then simply return the error. It doesn't accept duplicate data. Okay, actually. Next point, advantage of databases means sharing of data.
You can share a same data with multiple users, but keep in mind all users should be authorized users. Okay, it means the sharing of data second advantage. Okay, next one. Data integrity. This is also important point. Data integrity means data that the data is accurate and consistent in the database. Data integrity is a very important as there are multiple databases in a DBMS. Next point, all of these databases contains data that is visible to multiple users. So it is necessary to ensure that the data is correct and consistent in all the databases and for all the users. It means data integrity मेक श्योर करता है कि जो वेबसाइट है, कोई डेटाबेस सर्वर है, वह एक यूजर को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वह दूसरे यूजर को भी वही सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और जो इंफॉर्मेशन पहले वाले यूजर्स को प्रोवाइड किया वह एक्यूरेट है तो दूसरे वाले को भी एक्यूरेट डेटा ही देंगे। कंसिस्टेंसी वो कंटीन्यूअस वे में चलते हैं। क्लियर? वही यहाँ पर देखें क्या, ऑल ऑफ दिस डेटाबेसेस कंटेन डेटा, मतलब कि जो भी डेटाबेसेस है डेटा को कंटेन करता है दैट इज विजिबल, जो विजिबल होता है किसके लिए, मल्टीपल यूजर्स के लिए, और साथ में क्या होगा, एक्यूरेसी होगा और क्या होगा, कंसिस्टेंसी होगा। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन फर्स्ट यूजर को मिल रहा है वही इंफॉर्मेशन किसको मिलेगा, सेकंड। फॉर एग्जांपल google.com यह वेबसाइट एक्सेस किया तो गूगल इसको ओपन हो गया, तो दूसरा भी गूगल अगर टाइप करे तो गूगल ही ओपन होगा, याहू नहीं ओपन हो जाएगा। क्लियर? इसको हम क्या बोलेंगे, डेटा इंटीग्रिटी। ओके, नाउ डेटा सिक्योरिटी। Data security means very simple points. Data security is an important concept in a database. Only authorized users should be involved to access the databases, and their identity should be authorized using a username and password. Unauthorized users should not be allowed to access the database under any circumstances as if violates the integrity constants. Data security, very important points is related to advantage of database. Data security मेक श्योर करता है कि जो यूजर ऑथराइज्ड है वही डेटा को एक्सेस करेगा, अनऑथराइज्ड यूजर्स डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बैंकिंग साइट, जितने भी बैंकिंग साइट, बैंकिंग साइट, क्लियर? तो बैंकिंग साइट है तो यहां पर आपको प्रोवाइड करता है यूजर नेम और पासवर्ड। विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड हम क्या करते हैं, उस बैंकिंग साइट में लॉगिन करते हैं, डेटा ट्रांजैक्शन कर देते हैं। अगर अनऑथराइज्ड बंदा है, अनऑथराइज्ड यूजर से और बैंकिंग सिस्टम में लॉगिन हो गया तो वो क्या कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो डेटा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, की कंसेप्ट है। और याद रखिएगा डेटाबेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आता है वो हमेशा किसकी बात करता है, डेटा सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योर हो, मेरा डेटा क्या सिक्योर हो, अनऑथराइज्ड यूजर्स को एक्सेस न कर पाए। क्लियर है? वही अनऑथराइज्ड यूजर्स को एक्सेस नहीं करने दे रहा है तो उसके लिए
आइडेंटिटी के लिए रिक्वायर्ड होगा, जहां पर हम किसके लिए यूज करते हैं आइडेंटिटी के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड। बहुत सारे और भी तरीके अप्लाई होते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए डेटा को सिक्योर करने के लिए हमने क्या यूज किया, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज privacy. Simple thing. The privacy rule in a database state only the authorized user can access the database. Same as according to data security. It means authorized user can access the database. Okay. And next one, backup and recovery. Backup and recovery. Okay. Backup and recovery. Database management system automatically takes care of backup and recovery. Okay, database management system, and it means DBMS. DBMS, as you know, this is the software. This is the software, or you can say RDBMS. This is also our software. Okay, responsible for creating, managing or databases. Okay, so what databases softwares provide one facility that is called backup and recovery. This facility provide a backup and recovery also. If data, in case data going lost, then backup store, make a duplicate copy and store the data, and if required they call it. Okay, database management system automatically take care about backup and recovery. रेगुलर इंटरवल पे डीबीएम में सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बैकअप और रिकवरी किसी भी डेटा का स्टोर करते हैं, ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं। अगर आपको करना है तो यूजर मैनुअल भी कर सकते हैं, बट डीबीएम में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होती है कि वो ऑटोमेटिकली बैकअप को क्रिएट कर देते हैं। इन केस अगर डेटा लॉस हो जाए तो हम वहां से एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? डेटा कंसिस्टेंसी, सेम data consistency ensured in a database because there is a no redundancy. डेटा कंसिस्टेंसी कब हो सकती है, जब टेबल के अंदर डेटा डुप्लीकेट न हो। अगर डेटा डुप्लीकेट हो गया तो एक डेटा अगर रमेश नाम का कोई रिकॉर्ड है, सेकंड में रमेश आया तो रमेश नाम का रिकॉर्ड आएगा तो दूसरा रिकॉर्ड भी आ जाएगा। क्लियर? तो इसके लिए मैंने तीसरा फील्ड लगा दिया आईडी, जिसमें मेंशन किया फर्स्ट वन क्या 101, दूसरे का 102 एंड सो ऑन। एक नेक्स्ट फील्ड लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डेटा को क्या बनाना है, कंसिस्टेंसी फॉर्म बनाना है। और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि नो डेटा रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को क्या करना है, कंट्रोल करना। क्लियर? तो कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको माइंड में रखना है अबाउट द एडवांटेज ऑफ डेटाबेसेस। Reduce data redundancy, first one, sharing of data. Next, data integrity, data security, and privacy also. And last one, backup, recovery, data consistency. These are the important points related to advantage of databases. Okay. Now. Next one, RDBMS. Next one, RDBMS. Very important. DBMS means a software package to create the data, store the data, or delete the data from the database. Okay. And RDBMS means R stands for relational. Okay. A relational means multiple tables linked together. Okay, so RDBMS is also software to store the data
from the database but multiple tables, 2 or more tables. Okay, so this is the simple thing about the RDBMS. RDBMS means relation between the multiple tables. That's all. Okay. Next concept is primary key. Primary key, PK. PK. Not I'm talking about the movie name PK. PK stands for primary. Okay. Okay. Primary key is a unique value that identifies a row in a table. Okay. Uniquely identify row in a table. But keep in mind, primary key doesn't accept null value or duplicate value. Okay, this is the important part. Next one, composite key. Composite key means it is a combination of two or more fields. Two or more fields used for identify record uniquely. That is called composite key. One more key concept, foreign key, FK. Short name is FK. Okay, foreign key is also a key that are present in another table. Okay, suppose I have two tables. We can see here example. This is the primary key. Okay, and both are combined together, composite key, single primary key. Using the primary key and primary, this primary key is called a foreign key. Okay, combine two tables. Okay, जब हम दो टेबल को लिंक करते हैं, दो टेबल को कंबाइन करते हैं, तो एक टेबल हमारा क्या होता है, प्राइमरी की होता है, दूसरे टेबल में भी एक प्राइमरी की होगा। तो जब ये कंबाइन होता है तो एक टेबल का जो प्राइमरी की है दूसरे टेबल के लिए क्या बन जाएगा, फॉरेन की। दैट्स ऑल। ओके, वी कैन सी हियर a relational database is a type of database। यहाँ पे किसका टाइप है, डेटाबेस का टाइप है। It uses structure that allow us to identify and access the data in relation to another piece of data in the database. Okay, often data in a relational database is organized into tables. Simple thing, relational means multiple tables store the data. Okay, and each and every table linked together using the key, primary key and foreign key. That's all. Okay, so everyone try to learn about topic databases. Database first one. Second one, advantage of databases. Third one, some key concept about flat file versus relational file. Okay, next one, DBMS versus RDBMS. Next one, key concept like primary key, that is called PK. PK. Next, composite key. Next, foreign key. Foreign key. Okay, these are the topics for today. Everyone learn and make the notes. Okay, thank you for watching my video. Thanks a lot.